Good morning, Kimi ma'am. Hello. Hello. Good morning, Shivali ma'am. Good morning, ma'am. How are you? I'm absolutely fine, ma'am. What about you? All good. Kimmy ma'am has joined. Yes, ma'am. She has joined. We'll just start within 5 minutes or 3 minutes. Okay. Yes, good morning to all present. Good morning, Shivali ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, Kimi ma'am is there in the meet? Yes, ma'am. Let me check.
Ma'am, she is there, I guess. So can we start with the event? Yes, ma'am. Yes. Kimi, ma'am, are you there now? Hello. Shivangi, ma'am, let me talk to Kimi, ma'am, once. Just a Okay, second. ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, Kimi. Yes, ma'am. You are there. Shivangi, ma'am, let's start the session. Ma'am is there. Okay, ma'am. Okay. So good morning, everyone. I am Shivangi on the behalf of Placement Cell, Khalsa College for Women, Civil Lines, Ludhiana, is here to introduce a great woman personality who just began someday like all of us wish to do. We have among us CS Kimi Midda. A great information ride has already played its role since the last 2 days of workshop on role of company secretary in corporate governance. Nobody walks unbothered on their journey, especially women. Starting all the way from 2006 till 2015, every thread was carefully chosen and woven into the masterpiece who stands in front of us to enlighten the budding generation. I feel super delighted to share that it has been more than 12 years since this woman stepped out into the world of business. Everyone can't be perfect in everything they do. So one needs to choose a subject to establish mastery in it. Setting up business, corporate law advisory, trademark advisory, reconstruction of companies, RBI compliances might only form a group of world jargon for most of us. But she has spent her years in these key areas. She has solely handled compliances of more than 32 companies of a group and even acted as general counsel for strengthening the governance framework. Giving her best shot to her work and evolving with time, she received nil adverse comments in her internal and external audits. She seems to be a firm believer of a saying that we stop growing when we stop learning. To keep herself updated, she got trained for certificate course in CSR 2020 by the Institute of Company Secretaries in India. A to Z basics by Z Career, diploma in tele, etc. are just a few jewels from her treasure of knowledge. Ma'am, the allotted time will run short if I stay and share your progress. So I take a pause and request you to join us and share your wisdom. Over to you, ma'am. Thank you so much, Shivangi. Thank you so much for beautiful welcome. I hope I'm audible to everyone. Am I audible to everyone? Kimmy ma'am, you are not audible. Yes, ma'am. That's Am I audible now?
Yes, girls. Meanwhile, if you have any query regarding yesterday's session, you can ask from Shivali ma'am. Any query, girls? Hi, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Yeah, Shivangi, can you listen to me? Yes, ma'am, you are perfectly audible. Okay, okay. Thank you. Thank you so much for confirming. I'm so sorry. There was some glitch at my end, probably from my laptop only. So I'm so sorry for this delay. So No yeah, issues. hi everyone. This is Kimi, and I am CS. So today here I'll be sharing a few ideas or the a few of information about how the board meetings and the general meetings to be conducted, what exactly the board meeting and the general meetings are. I hope you have gone through the little details of how the company work processes are, and what is the role of CS. May I have the answers as well? Like, can we make it a little interactive instead of just throwing the information? Yes, ma'am. May I have the answers, yes or no? Yes, ma'am. Thank you so much for confirming. Okay, so here my topic with you guys are board and annual general meetings. So I will be sharing a slide I prepared for you guys to give a brief, not detail, just a brief about what the board meetings and annual general meetings are. Just give me a moment, please. Okay, so is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, great. Okay. Uh, can anybody tell me what have you learned in your previous 2 days workshop? So I will start from there only. Anything? Any point? Ma'am, in first workshop, we discussed about what is CS and the provisions related to the meetings like proxy, quorum, notice, agenda, minutes. Minutes. Okay. Perfect. Perfect. So, so we have, I mean, you have gone through everything which is desired by a CS, right? But if we will go in detail, there are different kinds of meetings. जो companies हैं different meetings करती हैं for different purposes. Few meetings are board meetings, annual general meetings, extraordinary annual general meetings, auditors meetings, statutory audits होते हैं हमारे यहाँ पर, but let's talk about the meetings. तो हमारी जो main meetings होती है वो होती है board meetings and annual general meetings. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा difference बताऊंगी कि board meetings होती क्या है और annual general meetings होती क्या है. So let's start with the board meeting first, or the difference. Let's start with the difference कि annual general meeting and board meeting में difference क्या है. Meetings का idea है किसी को? Since you have gone through the notices, quorums, agendas, what are the meetings? My meeting is what where two or more persons discuss anything related to the work. Absolutely. तो जब कोई बिजनेस होता है, कोई कंपनी बिजनेस करती है, तो वो इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं चला सकता. There are board of directors. There is a complete board and their councils help them to run the organization. जब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द काउंसिल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस को डिफाइन करने में, एक डिसीजन लेने में, परफॉर्मेंस को देखने में, उसको बोर्ड मीटिंग बोला जाता है. बट
एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहां पर शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. दे वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट कंपनी इज डूइंग. पूरे साल का जो फाइनेंसेस हुए हैं, जो प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, वो सब एनुअल जनरल मीटिंग में डिफाइन किया जाता है. बोर्ड मीटिंग जो होती है वो डिपेंड कि कब कंपनी को जरूरत है डिसीजंस लेने की और सबको मिलने की. कंप्लायंसेस जो बोलते हैं वो 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर बोलते हैं, और एज पर लॉ एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वंस इन अ ईयर होती है. तो बोर्ड मीटिंग is the meeting that is held for more than once in a year and evaluate the performance by the management and decide the future action, like what business is going to do. An annual general meeting is held once in a year by keeping the interest of the shareholders and investors in mind and to check the financial conditions of the enterprises. All right, have you got the difference between annual general meeting and the meeting? Come on guys, Paka, please answer. Yes, ma'am. और नहीं समझ आया? आ गया ma'am समझ. Okay, I think I am getting answer from only one person. However, we are probably 56, 57 persons in the meeting. So please be a part of it. जहां पर आपका जो डाउट है, you can always ask me. तो अभी मैं just एक brief दे रही हूँ difference का annual general meeting and board meeting का. उसके बाद we'll go with the processes as well. All right? Hello. Yes, ma'am. So thank you. Okay. So the board meeting have more impact on the overall enterprises, as its main focus is on deciding future actions and decisions of the enterprises for its betterments for the organization. Like board जो है, जिसमें board of directors और जो council members है, जो भी advisors होते हैं board के, वो लोग मिलकर एक future action decide करते हैं और जो performances है company की वो discuss करते हैं. But in annual general meeting ऐसा नहीं होता है. Annual general meeting don't have much impact on the overall organization as its main focus is in the interest with the shareholders and investors, because annual general meeting का purpose ही यही है कि shareholders और investors को information देना that what the company has done in the past 1 year and what the company is going to do in the one next year, because investors are mostly concerned with their profits and where their money is going to be. उनको दो ही concerns होते हैं और वही हम उनको define करने के लिए, justify करने के लिए annual general meeting करते हैं, right? Okay, and the next difference is board meetings help maintain systematic growth and leadership required for the organization to grow and benefit from substantially. बोर्ड मीटिंग की जरूरत हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी पड़ती है. लेट्स सी, अगर कंपनी को बैंक अकाउंट खुलवाना है तो बैंक के पास डायरेक्टली कंपनी जाएगी और बोलेगी कि बैंक अकाउंट खोल दो, ऐसा नहीं होता है. द बैंक आस्क फॉर अ रेजोल्यूशन, अ डिसीजन दैट कंपनी हैज टेकन दैट दे वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट विद देम. उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है और वो होता है बोर्ड मीटिंग में, जहां पर देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट to take the decision. For example, आप मुझे बताइए प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स मिनिमम हो सकते हैं या होने चाहिए? 2 directors. 2 डायरेक्टर्स, राइट. तो जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है प्राइवेट कंपनी में तो दोनों डायरेक्टर्स की प्रेजेंस होना जरूरी होती है. एक डायरेक्टर कभी डिसीजन नहीं ले सकता है, राइट? तो दिस is the basic thing that when an organization has to do something substantial, they hold the board meetings, take the decision, pass the board resolution, and forward the concerned authorities where it was desired. Annual general meeting में क्या होता है? Annual general meeting helps in keeping up with the investments and the financial status of the enterprises concerning the shareholders and investors, which I have already explained you guys, right?
Board meetings have more impact on the overall enterprises as its main focus is on discussing future actions and decisions for the enterprises for its betterments for the organization. Like company has plans to take a loan, right? And expand the business, to buy a land, to lend some property, to do anything. It can be even filing of a return. अगर company ने कुछ ऐसा करना है, तो company has to have passed a board resolution to make that decision and forward it to the concerned authorities. But annual general meeting साल में एक ही बार होती है और वो सिर्फ shareholders और investors को उनके rights define करने के लिए होती है, उनकी details देने के लिए होती है. So have you understood both the differences, guys? Yes, ma'am. Thank you so much. अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे जो students है वो कौन सी stream से है? Sorry. Ma'am, BCom second year. Oh wow. और CS के भी कोई students हैं क्या? है या नहीं? Yes, No, ma'am. ma'am. No, okay. So probably this workshop will help you to, decide that whether you want to be a CS or not. अगर आप लोगों ने CS कोर्स में अभी तक एडमिशंस नहीं लिया है तो बीकॉम के बाद आप ले सकते हैं. और CS के रोल अब यहाँ पर खैर मैंने अभी तक आपको सिर्फ मीटिंग का डिफरेंस बताया है, मैंने आपको रोल नहीं बताया CS का. तो यहाँ पर रोल इज दैट without a CS, these board meetings, are not able to be held properly. The CS is the only person who takes care of everything what the company has to do. The company secretary means company ka advisor, company ka counsel, company ka helper to do everything what the company has to do. Board takes the decision, but CS helps them to incorporate those decisions, right? अभी बोर्ड मीटिंग में भी CS होता है और एनुअल जनरल मीटिंग में भी CS की प्रेजेंस होना जरूरी होती है. ठीक है, आप लोगों को आइडिया है कौन सी कंपनीज को CS की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी कंपनीज को नहीं होती है? Do you have idea, guys? A listed company compulsory needed CS. अच्छा, और And public company जिसका paid up share capital 10 crore और उसके ज्यादा होता है, उससे चाहिए होता है. परफेक्ट. इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज की जो होती है, जैसे आप और मैं आज बैठे हैं और we decide to incorporate a company, we can do that. बट अगर हमारी पेड अप कैपिटल जो है 10 करोड़ से ऊपर चली जाएगी तो we will be mandatorily required to have a CS in our organization to see the businesses and how it runs. Because बहुत सारी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस को हम पे एप्लीकेबल करता है, कंपनीज पे एप्लीकेबल करता है जो एक CS देखता है, राइट? कंपनीज एक्ट की नॉलेज CS के पास है and CS is the main person who is required by an organization to run the organization and help in the system. All right, guys? Participation नहीं है बिल्कुल भी. बोर हो रहे हो कि मैं सुला रही हूँ? Understood, ma'am. Great. Thank you. Sorry to interrupt you, ma'am, but I request all the participants to turn on your videos. It makes session more interesting and interactive. Absolutely. Actually, in fact, I was trying to on my video, but I couldn't do that probably because of internet or I don't know what issue I have, but definitely I'll on my video. So guys, you can please switch on your cameras. Yes, participants, kindly switch on your cameras. Am I visible now? Yes, ma'am, you are perfectly visible. Correct. Shall I continue? Okay, ma'am, you continue. Okay. But students ने किसी ने भी camera on नहीं किया. Is it that bad?
Great. It's good to see Dipanshi. Good to see you. And where are other guys? Can I see all of them? Please wave your hands. Yes, girls, turn on your cameras. Kashish, Bharti, all of you. Komalpreet, Ravi, Prerna, Anshul, Shikha, Akirat, Bharti, Palak. Anyways, I think guys are not interested. Anyway, I'll continue. Okay, so board meetings और annual general meetings का मैंने आपको difference define किया. जो main meetings company में organization में होती है. What exactly board meeting is? Board meeting require more planning and detailed preparation than the usual corporate events as attended by the top corporate executives and leaders of the company. Board meetings ज़्यादा important है because यहाँ पर आपने decision लेना है that what company is required to do, what company has to do, and what is best for the company, right? Board meeting है क्या? जो general events होते हैं आपके formal या informal events अगर organization में होते हैं that doesn't seem to be that important. Of course they all are important but वहाँ पर इतनी importance नहीं होती क्योंकि वहाँ पर आपको particular decision नहीं ले रहे हो, आप लिए हुए decisions के बारे में बता रहे हो. पर जब decision लेना होता है you have to be more conscious, you have to be more precise that everything is right, everything is as per law, as per compliances, everything is on track, right? तो ये CS is the right person जो board को बताता है और help करता है to let them know the compliances that what is right, what is wrong. The board meeting is what? It is a formal meeting of the top executives and the directors of the company called to debate certain issues, problems, and to make decisions. Everyone have the right to put forward their views in the board meetings, but in their limits, right? Board meeting में कितनी board meetings होती हैं? As per Companies Act, हमारा जो एक्ट है उसमें सेक्शन 173 है जो डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स. 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए हमारे पास ईयर में और जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 30 डेज हमारी हो जानी चाहिए. ठीक है. As per the Companies Act, Section 173, subsection 1 of the company shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days from the date of company's incorporation, and thereafter hold board meetings in such a manner that not more than 120, it should be days, 120 days shall intervene between the 2 consecutive meetings and should be a minimum of 4 meetings every year. तो साल में हमारे पास हमको ऑर्गेनाइजेशन में 4 मीटिंग्स करनी है, राइट? आपको कंपनीज का डिफरेंस पता है? प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice. It's good to know. बीकॉम के स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट these days, right? हमारे टाइम पे हम लोगों को पता नहीं होता था. So anyways, एक नया concept आया before a few years. Previously, कुछ साल पहले ये concept आया था 1% company का. तो 1% पहले सिर्फ individual जो होता था वो अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता था. अभी कुछ साल पहले ये 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें एक ही पर्सन डायरेक्टर होता है. अभी जैसे मैंने मेंशन किया था कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स मिनिमम होते हैं और दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए. 1% कंपनी में ऐसा नहीं है क्योंकि जब पर्सन ही एक है, डायरेक्टर ही एक है, तो वो क्या मीटिंग करेगा, राइट? तो होली सोली उसी के डिसीजन होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल डायरेक्टर होता है. तो यहाँ पर मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रही थी कि एक 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोमेंट कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है.
At least one meeting of the board of directors has been conducted in each half of the calendar year. एक कैलेंडर ईयर में 6 months के गैप पे मीटिंग होना जरूरी है, provided that nothing contained in this subsection, जिस सबसेक्शन जो हमारा सेक्शन है 170 ये डिफाइन करता है मीटिंग को। तो यहाँ पर ये हमारा इसके साथ ही 174 जो है वो अप्लाई हो जाता है 1% कंपनी पे, और वो बोलता है कि देयर इज ओनली जब यहाँ पर एक डायरेक्टर है तो ये 6 months वाला इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट? ओके, एक मीटिंग हेल्ड करनी है अगर हमको बोर्ड मीटिंग, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स दिस शुड टेक केयर ऑफ। सबसे पहले हम मीटिंग करना क्यों चाहते हैं, ठीक है? तो हमारे जो पर्पसेस होते हैं मीटिंग करने के, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? एजेंडा। वेरी नाइस। तो हम लोगों के पास पहले हमारा एजेंडा डिफाइन होना चाहिए। सी ऑर्गेनाइजेशंस में मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, हमारे बीइंग अ सीएस हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जैसे एक या दो डायरेक्टर्स सब एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेट्स से एक डायरेक्टर प्रेजेंट है एंड दैट पर्सन आस्क द सीएस कि हमको ऐसे ऐसे डिसीजन लेना है, तो हमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। तो नाउ इट्स सीएस रिस्पांसिबिलिटी टू मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट कि ऐसा डिसीजन होना है। इसके लिए हम आप लोगों को इस वक्त पर इस डे पर इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? और हम उस एजेंडा उसमें अपने नोटिस को नोटिस बोला जाता है जो हम सबको भेजते हैं, और उसमें लिखते हैं, एजेंडा भी डिफाइन करते हैं दैट दिस इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। हम इसीलिए आपको बुला रहे हैं ताकि हर कोई अपने पॉइंट्स के साथ वेल प्रिपेयर्ड हो। सीएस नोटिस भेजता है एजेंडा के साथ, तब मीटिंग होती है और सीएस की प्रेजेंस में मीटिंग होती है। सीएस हेल्प करता है टू run the meeting, to organize the meeting. Decisions senior top executives के होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद CS is the person who takes the sign of everybody on the attendance sheets. Basically there is a whole process कि जब एंटर होता है तो एक पेपर साइन होता है, हम लोगों को एक पैक बनाकर रखना होता है जिसमें रजिस्टर्स, एजेंडास, पेन, फाइल्स ये सब हो, हम सबको डे टेबल पे प्लेस हो, वो टेबल पे हर चीज वहां पर हो। तो दिस इज अ प्रॉपर प्रोसेस एंड पार्ट। तो जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो दिस इज सीएस रिस्पांसिबिलिटी टू कंक्लूड द मीटिंग, और मीटिंग कंक्लूड होने के बाद मिनट्स को नोट किया जाता है। मीटिंग मिनट्स आर द डिसीजंस विद द टॉप एग्जीक्यूटिव्स और द डायरेक्टर्स टेक। वो कंक्लूड होने के बाद वो नोट डाउन करता है, विद 30 days में उनको रिकॉर्ड करता है एंड देन प्रेजेंट इट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग फॉर हिज सिग्नेचर्स, सो दैट वो उनको रिकॉर्ड में रख सके फॉर फ्यूचर पर्पसेस। हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं कंपनी के 20-20 साल पहले भी एक पर्टिकुलर डे को, पर्टिकुलर डेट पे क्या डिसीजन लिया गया था, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। So as per law, it is required to maintain all the records of the board of the minutes, right? तो यहाँ पर हमारे key points क्या है for an effective board meeting? सबसे पहले we have to be very clear and precise on the specific agendas that why we are going to hold a particular meeting. हम लोग prepare करते हैं meeting documents. For example, अगर कोई decision लिया जा रहा है, कोई deed sign होनी है, कोई पेटिशन है, कोई आप कह लीजिए लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो प्रिपेयर किए जाते हैं so दैट आप टेबल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है उनके सामने उनको प्लेस कर सको, वो उसको पढ़ सके और अपना डिसीजन दे सके। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। हम लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज फ्यूचर में आप लोग अगर सीएस बनते हैं, तो मैं यहाँ पर एज सीएस अपनी बात कर रही हूँ, हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड का पैक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक पर्टिकुलर पाउचेस बनाकर टेबल पर प्लेस कर देते हैं कि पर्सन यहाँ बैठेगा इसके लिए है, ये पर्सन यहाँ बैठेगा इसके लिए ये है, एंड अदर रेफरेंसेस एज वेल। कुछ भी किसी को कोई अगर रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर सिक्योरिटी एंड अदर अरेंजमेंट। सिक्योरिटी एज इन कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बोर्ड हो रही है और कोई भी अंदर आ रहा है और कुछ भी हो रहा है। तो इट्स सीएस होल
responsibility to organize that meeting. जैसे events organize होते हैं, ऐसे ही meetings organize होती हैं, और वो CS की responsibility होती है. With the help of the admin and the other staff and facilities, we help the top executives to do the meeting and take the proper decisions. और सबसे important क्या रहता है, ये CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. होता क्या है कि जब बोर्ड मीटिंग्स होती है ना, तो डिस्कशंस हो रही होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं सीनियर्स के बीच पे. तो यहाँ पर CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक देम स्टिक टू द आइटम ऑफ द एजेंडा, कि हमने उनको जिस चीज के लिए बुलाया है वो उसी चीज को डिस्कस करें, उससे एक्स्ट्रा इधर उधर स्ट्रे ना करें. राइट? To stick to the item on the agenda and don't allow discussions to stray or wander. Right? Like अगर हमारी बैंक अकाउंट खुलने की बात है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने, डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया, we are going to open a particular bank account with the HDFC Bank. मान लो वहां पर कोई और आ गया and they have contacts with some other bank, ICICI, Axis Bank and whatever, and they put forward their things कि नहीं हमको तो यहाँ पर खुलवाना है, हमको तो यहाँ तो खुलवाना है, but which is already been decided कि हमको HDFC में खुलवाना है. You have drafted a board resolution कि HDFC है. Once this decision is taken, आपको उसको monetize कर देना है कि yes it is done. उनकी discussions को आपने जितना आप कर सकते हैं, वैसे which is not allowed, CS बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता है because कई बार बहुत hot fights भी हो जाती है. So but you have to make sure कि the directors are stick to the one agenda and one item only. वो इधर उधर वेंडर नहीं करते. राइट? समझ आ गई की पॉइंट्स क्या है इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स के? यस मैम. ग्रेट. क्या है? Ma'am, हमारे पास firstly we एजेंडा have to होना prepare the agenda, and then Right. accordingly the documents has to be prepared which has to be presented in the meeting, and the वही एजेंडा पे बात होनी चाहिए जो डिसाइडेड हुआ था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे डेविएट नहीं कर सकते मैटर से. एब्सोल्युटली. ठीक है, तो तभी हमारी इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग हो जाती है. अदरवाइज क्या होता है, टाइम चला जाता है और मीटिंग में डिसीजंस नहीं हो पाते हैं, फिर आपको पोस्टपोन करनी पड़ती है, दोबारा मीटिंग्स अरेंज होती हैं, दोबारा से सब कुछ होता है. तो दिस गोज वेरी लॉन्ग. तो CS इज द पर्सन जिसको इस सबको मैनेज करना है, सो दैट टाइमली मीटिंग्स खत्म हो और डिसीजंस लिए जाए. राइट? मैं बहुत डिटेल में सेक्शन वाइज नहीं जा रही हूँ, आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ठीक है गाइस? ओके. So now what is the notices and agenda of the board meeting? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बोर्ड मीटिंग के लिए हम लोगों को पहले नोटिस देना, इनविटेशन देना होता है सबको कि हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं. उस इनविटेशन को हम नोटिस बोलते हैं. नोटिस में हम साथ में एजेंडा अटैच करते हैं, और अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं. एज पर लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट्स भेजने की, बट नोटिस एंड एजेंडा भेजा जाता है ताकि जो इनवाइटी है उसको पता हो कि आप उनको किस लिए बुला रहे हैं और वो वेल प्रिपेयर होकर आए. राइट? तो नोटिस कब जाता है? नॉट लेस देन 7 days. Notice in writing shall be given to every director at the registered address as available with the company. Registered address क्या होता है? जब कंपनी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है, they give their contact details, right? तो जनरली वो अपने ऑफिस की देते हैं. समटाइम देयर आर रेजिडेंशियल डिटेल्स एज वेल. तो हमारे पास जो भी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, हम उनको एक रिटन नोटिस भेजते हैं. ये जो रिटन नोटिस होता है ये हम उनको बाय हैंड भी दे सकते हैं. लेट्स से आप 8 या 9 दिन बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि एक डायरेक्टर आज ही ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है या आया हुआ है, या फॉर सम पर्पसेस ही और शी इज प्रेजेंट इन द ऑफिस. आप अपना नोटिस तैयार करके उसको बाय हैंड दे सकते हैं, एंड देन यू टेक अ पेपर साइंड बाय दैट पर्सन दैट ही और शी हैज रिसीव्ड द नोटिस. इसको बाय हैंड डिलीवरी बोलते हैं. ठीक है? बाय पोस्ट में आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं. वैसे तो कुरियर्स वगैरह भी होते हैं, बट जिससे भी आप भेज रहे हैं यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रूफ कि आपने उनको नोटिस भेजा है. कई बार क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कई बार क्या होता है कि डिसीजंस हो जाते हैं, कंपनी पे इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई डायरेक्टर उठ
के आता है कि मुझको तो पता ही नहीं था, ऐसा क्या हुआ। और फिर उसके बाद क्वेरम देखा जाता है कि अगर वहां पे क्वेरम प्रेजेंट है डिसीजन लेते हुए, तब तो वो वैलिड है बोर्ड रेजोल्यूशन, अदरवाइज डिसीजंस को वॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत केसेस में होता है। तो यू शुड ऑलवेज हैव कई बार डायरेक्टर्स जो है केसेस कर देते हैं कंपनीज पे कि भाई ये डिसीजन ले लिया गया, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं है। तो फॉर दोज केसेस आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए दैट आपने उनको बाय हैंड दिया है नोटिस, या बाय पोस्ट दिया है, या बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप लोग? एनीवन प्लीज? ईमेल। राइट, ईमेल। तो ईमेल जब आप भेजते हैं तो ये बिजनेस लैंग्वेज में ये एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि आप एंड में एक नोट ऐड कर दें, काइंडली एक्नॉलेज द ईमेल, सो दैट सामने वाला पर्सन आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दे दैट ही और शी हैज रिसीव्ड द ईमेल, राइट। जब इट्स अ टिप आल्सो, अभी आप बीकॉम में है, यू प्रॉब्ली गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब्स एज वेल, यू विल बी गेटिंग कॉल्स फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास इंटरव्यू के लिए मेल्स आती हैं कि आपको सो एंड सो डेट पे बुलाया एंड ऑल। So it's always good and the best practice to acknowledge that email and revert to the email that yes, I am in receipt of the email and I accept or I acknowledge my presence for the day I have asked me. ठीक है, तो it's just a tip कि acknowledgement बहुत जरूरी होती है। It's a best practice. If you are a good professional, आप acknowledge जरूर करेंगे, right? In case of in case the board meetings is called at a shorter notice. अभी मैंने आपको क्या बताया, कितने दिन का नोटिस होता है? 7 days prior, right? बोर्ड मीटिंग से 7 दिन पहले हम नोटिस भेजते हैं। तो अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, बहुत इमरजेंसी वाला डिसीजन लेना है, तो आप शॉर्टर नोटिस कॉल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टर नोटिस मतलब अभी बैठे हैं आप, कल मीटिंग बुला सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको 90% जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे एक अग्रीमेंट लेना जरूरी है दैट दे अग्री कि आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग जो है वो हेल्ड कर सकते हैं। और उस केस में ये भी जरूरी होता है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट हो मीटिंग में। बट आपको डायरेक्टर्स का आइडिया है कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, किस तरह के डायरेक्टर्स होते हैं? एनीवन? Ma'am, could you please repeat the question? Yes, sure. मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि डायरेक्टर्स कौन कौन सी तरह के होते हैं? Independent director, nominee director, Women directors, Full-time directors, alternate independent. directors. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो थोड़ा बहुत आइडिया है सबको। जब आप इन डेप्थ आप एक्ट पढ़ेंगे तो आपको इन सबके पर्पसेस पता चलेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है। तो इन्हीं डायरेक्टर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप एक बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे कर रहे हैं तो पूरे क्वोरम में एक इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, agar if he or she is not present, then the decision of the meeting shall be circulated to all the directors and it shall be final only after rectification of the decision by at least one independent director, right? agar आप कोई बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं शॉर्टर नोटिस पे तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप पूरे डायरेक्टर्स को बोर्ड रेजोल्यूशन जो है सर्कुलेट करेंगे और वो फाइनल तभी होगा जब वो रेक्टिफाई होगा डिसीजन बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेक्टिफाई मींस कि अप्रूव होगा, वो बोलेगा कि हाँ इट इज ओके, राइट। एजेंडा क्या होता है? बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब there can be various topics in the agenda, क्योंकि हम बोर्ड मीटिंग्स की बात कर रहे हैं जो हमारी कंपनी की फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए होती हैं। तो इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंपनी ने क्या किया, क्या है, क्या नहीं है, कॉल टू ऑर्डर की दैट एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक, अप्रूवल ऑफ प्रीवियस मीटिंग्स
कि हमारी पुरानी मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था, हमने वो ऑन नोट कर लिया है, ऑन रिकॉर्ड्स कर लिया है। कोई फर्दर अनाउंसमेंट्स अगर हम करना चाहते हैं कि दैट कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और किसी को वो हायर कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पे बिजनेस एग्जीक्यूटिव आ रहा है, या कोई कंपनी लैंड बाय कर रही है, कोई सब्सिडरी खोल रही है, तो दीज आर द वेरियस अनाउंसमेंट्स। बिजनेस आइटम्स में अगेन व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेसेस, थिंग्स एंड प्रोसेसेस, और कोई अदर बिजनेसेस अगर आपको करने हैं, अदर बिजनेसेस में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी व्हिच इज नॉट डिफाइंड इन अबव थिंग्स। लाइक कोई आप ऑफिस ले रहे हो, आप कोई गोडाउन ले रहे हो, आपने किसी बंदे को अथॉरिटी दे दी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन करने की। कंपनीज आर ऑलवेज सेपरेट लीगल एंटिटीज फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो कोई अगर एक इंडिविजुअल या डायरेक्टर डिसीजन लेता है, वो कंपनी पे इम्प्लाइड नहीं होता है जब तक वो बोर्ड मीटिंग में थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन जो है अप्रूव ना हुआ। ठीक है, समझ आया? ओके, मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। मैं सुला रही हूँ कि आप लोग सो रहे हो? यस मैम। प्लीज बी अटेंटिव। अगर बोरिंग लग रहा है तो वी कैन टॉक ऑन समथिंग एल्स। अगर आपके क्वेश्चंस हैं सीएस के रूल से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, मीटिंग्स या कुछ भी, एनीथिंग, ऑलराइट? बिकॉज what is the purpose of this session? मैं ये क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग सोए ना, आप लोग बात करते रहे मुझसे। So that we could learn more about CS. Yes, the role of CS की CS करता क्या है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको नोटिस एंड एजेंडास के बारे में बताया, वो भी किसके? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग और एनुअल मीटिंग का तो डिफरेंस समझ आ गया था सबको? Yes or no? Yes ma'am. Great, great. Thank you so much for confirming. Okay. अभी क्या है? रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग्स इफेक्टिवली। मैं आपको बोर्ड मीटिंग्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुकी हूँ। मेन रिक्वायरमेंट्स जो नोटिस एंड एजेंडास की होती है, किस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, सीएस का रोल क्या होता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, राइट? तो एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड द फेलियर। अरेंजमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि देयर शुड बी पर्टिकुलर प्लेस डिसाइडेड जहाँ पे कोई इंटरप्शन ना हो, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, यू नो प्रॉपर, अगर बड़े लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं तो प्रॉपर साउंड सिस्टम्स हो, एवरीथिंग शुड बी देयर। Chairperson of the meeting and the company secretary or audio-visual connections to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures. Exactly the same जो मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ पर हम लोगों को क्या-क्या we have to make sure before the before holding a meeting to ensure the availability of proper video conferencing and other audio-visual equipment or the facility for providing transmission of for effective participation of directors and other authorized participants at the board meeting. Okay, so this is a new point. होता क्या है, जैसे अभी आप लोगों को पता है कोविड आया था, तो कोई भी किसी से मिल नहीं रहा था, तो इस केस में मीटिंग्स कैसे होंगी जब तक फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी? तो इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो विजुअल मीन्स अप्रूव कर दिए गए थे कि आप मीटिंग्स कर सकते हैं। बट उसका मेन क्या था कि वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास, जैसे मिनट्स और एजेंडास हम लोग रिकॉर्ड करते, मतलब बुक्स जो है हम लोग बनाते हैं, साइन करवाते हैं। तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग हो रही होगी प्रॉपर, आई थिंक। तो इसी तरह से मीटिंग्स की भी रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और जो भी हमारा ऑडियो विजुअल मीन्स हम यूज कर रहे हैं, वेदर इट्स Zoom, Skype और अदर सॉफ्टवेयर, टेलर्ड सॉफ्टवेयर जो भी है, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे एक विजुअल मीन्स अप्रूव हुए थे फॉर होल्डिंग दी बोर्ड मीटिंग, जहां पर डायरेक्टर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर्स जो है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, रीजन बीइंग दे आर अब्रॉड, नॉट इन इंडिया। बट इस केस में मीटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मीटिंग हो पाएगी क्योंकि ऑडियो विजुअल मीन्स अप्रूव है। There are certain laws and compliances which we have to make sure that they are going right, and then we can
hold the meetings. And who are the persons who make sure that everything is in order? The CSR. All right. To record the proceedings and prepare the minutes of the meetings. So requirement, सबसे important requirement क्या है हमारी, कि जो भी proceedings हुई हैं, जो भी decisions हुए हैं, हमको minute book prepare करनी है, उसमें record करने हैं within 30 days और chairperson of the meeting से sign कराने हैं. अभी यहाँ पे chairperson of the meeting मैंने लिखा है, but आप लोगों को पता है chairperson कौन होता है? ओके मैं बताती हूँ. चेयरपर्सन इज द पर्सन जिसको सभी जो मीटिंग मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि दैट पर्सन विल होल्ड द चेयर, और उसके पास एक एक्स्ट्रा वोट की पावर होती है. ठीक है, उसको चेयरपर्सन बोला जाता है. जनरली मीटिंग जब ऑर्गेनाइज होती है या हेल्ड होती है तो वहां पर एक पर्सन डिसाइड किया जाता है कि दिस पर्सन विल चेयर द मीटिंग. अदरवाइज जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी की, कॉर्पोरेशन के टाइम पे जो बनाए जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स एंड अदर पर्पसेस, अदर लॉज लिखे होते हैं कंपनीज के, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम. एक्सक्यूज मी मैम. तो मैम आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है. Yes, ma'am. अभी ऑडिबल है? यस मैम. चेयरपर्सन वाला दोबारा बता दो. सॉरी, चेयरपर्सन वाला दोबारा बता दो. चेयरपर्सन. ओके, चेयरपर्सन इज द पर्सन जो मीटिंग मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन जो है लीड करेगा मीटिंग को. ठीक है, उसके पास एक एक्स्ट्रा वोटिंग पावर होती है. जिसके पास एक वोट होता है, चेयरपर्सन के पास एक एक्स्ट्रा वोटिंग पावर होती है. ठीक है, चेयरपर्सन आप मीटिंग में भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब मेंबर्स जो है मीटिंग्स में भी डिसाइड करते हैं, और जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है, कई बार जब कंपनी कॉर्पोरेट होती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन और वन ऑफ द डायरेक्टर जो है वो चेयरपर्सन रहेगा, तो वो पर्सन भी हो सकता है. तो देयर आर टू वेज टू डिसाइड द चेयरपर्सन. एक तो मीटिंग में डिसाइड हो जाता है और दूसरा आर्टिकल्स में लिखा होता है. हमेशा नहीं लिखा होता, कोई कोई कंपनीज पहले लिखती हैं आर्टिकल्स में. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you. To ensure the availability of proper video conferencing and other audio-visual equipment and facilities for providing transmission of the communications for effective participation of the directors and other authorized participants at the board meeting. ये video conferencing and audio-visual वाला point समझ आ गया था आप लोगों को? Yes or no? यस मैम. बस मैम थोड़ी सी आप लाउड बोल लो क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक ग्लिच है. Okay, okay, okay. Okay. मैम आई थिंक योर माइक इज म्यूट. Let me check. No, it is not on mute. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay. तो हम लोग कहाँ थे? ऑडियो विजुअल मीन का मैं आपको बता रही थी. ऑडियो विजुअल मीन में क्या होता है कि कई बार जो डायरेक्टर्स हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो लॉ जो है अप्रूव करता है आपको मीटिंग्स करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. ठीक है, तो जो भी आप मीन्स यूज कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए उसकी. ठीक है, एज अ CS यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग द रिकॉर्डिंग्स एज वेल. ठीक है, उसके बाद आप उन प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने मिनट बुक में और उसको साइन करवाते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द चेयरपर्सन. चेयरपर्सन आप लोगों को क्लियर हो गया है कि चेयरपर्सन क्या होता है? ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग. अब एनुअल जनरल मीटिंग का मैंने आपको डिफाइन कर दिया था. एनुअल जनरल मीटिंग वंस इन अ ईयर होती है. जैसे बोर्ड मीटिंग के लिए हम लोग नोटिस जो है वो क्लियर 7 days बिफोर भेजते हैं, एनुअल जनरल
हम 21 days बिफोर भेजते हैं। कितने दिन पहले भेजते हैं? 21 days. 21 राइट, क्योंकि वो हमको मेंबर्स को देना होता है। तो अगर बोर्ड है वो 4, 5, 6, 7 लोगों का होता है, मेंबर्स कैन बी इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, तो वो आपको मेक श्योर करना होता है कि हर मेंबर को वो नोटिस मिले। और नोटिस भेजने का सेम प्रोसीजर होता है। आप बाय हैंड भेजते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भेजते हैं। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेजा जाता है, थ्रू मेल्स यू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोसीजर इसमें यही है। 21 क्लियर डेज पहले आप नोटिस भेजते हैं। नोटिस में आप डिफाइन करते हैं लाइक बोर्ड मीटिंग कि कौन सी प्लेस पे, कौन सी डेट को, कौन से डे को आप मीटिंग कर रहे हैं और किस टाइम कर रहे हैं। जो मीटिंग होती है वो हमेशा 9 से 6 के बीच में होती है, जो फॉर्मल मीटिंग, राइट। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द एजीएम? एजीएम की एजेंडा प्री डिफाइंड क्लॉजेस है। जैसे बोर्ड मीटिंग में तो मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी पर्पसेस है, कंपनी ने कुछ भी करना है तो वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करती है और बोर्ड डिस्कशन पास करती है। बट एजीएम के पर्टिकुलर पर्पसेस है जहां पर शेयर होल्डर होंगे, उनको बताया जाएगा फाइनेंशियल्स के बारे में। ठीक है, उनको जो उनके लिए इम्पोर्टेंट मैटर्स है। अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, शेयर होल्डर्स को क्या लेना देना, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब है, उनको अपने पैसों से मतलब। आपने लैंड खरीदना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, लैंड इज इम्पोर्टेंट। लेट्स से आपने गोडाउन लेना है, शेयर होल्डर्स को क्या लेना देना, राइट। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मैटर्स। तो एजीएम में सिर्फ वो मैटर्स कंसीडर होते हैं जहां पर शेयर होल्डर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। So these are the defined. So I have jot down the points which are defined for the agenda of the AGM. पहला क्या है? Consideration and adoption of the financial statements. Consider करना और adopt करना financial statements को. Consideration of directors' reports and auditors' reports. Directors ने क्या बताया है, auditors ने क्या बोला है अपने reports में after scrutinizing the records. Dividend declaration of the shareholders. पैसों से मतलब है, शेयर होल्डर्स को तो पैसा चाहिए, तो डिविडेंड इज देयर प्रॉफिट, द परसेंटेज दे विल बी गेनिंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो वहां पर वो जरूरी पॉइंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू रिप्लेस द रिटायरिंग डायरेक्टर। अभी क्या हो रहता है, जैसे आप लोगों को कंपनीज जब आप पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। वहां पर रिक्वायरमेंट होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डायरेक्टर रिटायर हो जाता है, उसकी जगह कोई और आता है या उसकी भी अपॉइंटमेंट होती है। तो इस मैटर को भी कंसीडर किया जाता है अपने एजेंडा में एजीएम के। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड डिसाइडिंग दी ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन पेंशन हो जाता है, बट कभी कभी उसको सोली बिटवीन द डायरेक्टर एंड द ऑडिटर रख लिया जाता है। तो बट अपॉइंटमेंट जो है ऑडिटर की, कौन कंपनी का ऑडिटर होने वाला है, इसको मेंशन किया जाता है एजेंडा में। अपार्ट फ्रॉम द अदर अबव ऑर्डिनरी बिजनेसेस, दीज आर द ऑर्डिनरी बिजनेसेस। कुछ स्पेशल बिजनेस हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेसेस होते हैं जो आपको मेंशन करना पड़ता है कि दिस अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स कुछ और भी बिजनेस होने वाला है जो स्पेशल बिजनेस है और वो एजीएम में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओके। नोटिस ऑफ एजीएम, अ कंपनी शुड सेंड द नोटिस ऑफ एजीएम 21 क्लियर डेज बिफोर। ये हम कर चुके हैं, पर किसको भेजेगी? सभी मेंबर्स को। ठीक है, और टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ deceased member and assignee of the insolvent member. तो ये पॉइंट किसी को समझ आया? मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जा रही, आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि ज्यादा डेप्थ में जा रही हूँ? No, ma'am, it's okay. ओके ओके, ग्रेट। आई थिंक इस पॉइंट से आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि जो मेंबर्स होते हैं, जो नोटिस होता है एजीएम का, वो सभी मेंबर्स को जाता है। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो
सभी शेयर होल्डर्स को जाता है। अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई है तो उसका जो भी नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड्स में है कंपनी के, उसके पास जाएगा। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी जो होता है उसके पास भी वो नोटिस जाता है, उसकी प्रेजेंस भी मैंडेटरी होती है एजीएम। ठीक है। All the directors of the company are also required to attend the meeting. ऐसा ना हो कि मेंबर्स बुला लिए, डायरेक्टर्स डिसीजन जिसने लिए या जो कंपनी चला रहे हैं वो लोग है ही नहीं है। ऑडिटर को इसलिए बुलाया जाता है, कई बार फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ऑडिटर ही नहीं होगा तो कौन देगा आंसर्स? इस बेसिस पे कैलकुलेशन हुई है, तो इसलिए ऑडिटर की प्रेजेंस होना भी जरूरी है। Minutes of AGM. Every company has to prepare the minutes of AGM compulsorily. जैसे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कंपलसरी होते हैं, ऐसे ही एजीएम के मिनट्स कंपलसरी होते हैं। The minutes of the AGM means the written record of the proceedings of the meeting. This is for both AGM as well as the board meetings. जो proceedings होती हैं उनके recordings को minutes बोला जाता है। Recordings मतलब बुक्स में जो आप written down करते हो वो भी। ठीक है। The company secretary will record the proceedings of the AGM. Company secretary जो है रिकॉर्ड करता है क्या बोर्ड मतलब क्या प्रोजेक्ट था, मतलब डिस्कशन थी, क्या प्रोसीडिंग थी, उस पे क्या डिसीजन हुआ, क्या बोर्ड डिसीजन पास हुआ। The minutes of the AGM should be signed and entered in the record books within 30 days of the AGM, and same as with the board, normal board meetings. Any member and shareholder of the company, upon request of the company, can inspect the minutes book of the AGM on paying a prescribed fee. क्या होता है, कई बार कई मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हो पाते मीटिंग में एंड दे हैव सर्टेन डाउट्स इन देयर माइंड। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा दे दिया, मीटिंग अटेंड, पैसा दे दिया एज इन कि वो इन्वेस्टर बन गए, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। they can always ask for the minute book of the AGM by paying a certain amount. लॉ ने कुछ certain amounts define किए हुए हैं जो टाइम बाय टाइम चेंज हो जाते हैं। खैर अभी 10 साल से चेंज नहीं हुए, तो वो प्रिस्क्राइब फी आप पे करके या मेंबर पे करके मिनट्स देख सकते हैं। ठीक है। मेंबर के राइट क्या होते हैं एजीएम पे? राइट्स, क्योंकि मेंबर्स आर द इन्वेस्टर्स, दे आर पेइंग द मनी। वो बिजनेस ओनर्स भी है क्योंकि उनके पैसे के बिना तो काम होगा नहीं, तो दे हैव सर्टेन राइट्स कि वो कंपनी से क्या क्या डिमांड कर सकते हैं या किस तरह से अपने राइट्स को या किस तरह से अपने आप को चला सकते हैं। लेट्स से वो खुद नहीं आना चाहते तो किसी और को भेज देंगे। प्रॉक्सी आप पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, आपको बता दिया गया था, है ना? तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। द मेंबर्स राइट्स इन एन एजीएम, the members including shareholders of the company are entitled to attend and vote at the AGM. जैसे resolutions की बात हुई तो वहां पर वोट लिया जाता है कि what is right, you agree or you disagree. तो members के पास राइट है वोट करने का। Members can cast their votes by a physical ballot or a postal ballot or through e-voting. Members can appoint proxies to attend an AGM and vote on their behalf. मैं नहीं जा सकती, मैं एक पेपर साइन करके दे दूंगी जब भी हम लोगों के पास एक इनविटेशन आता है, नोटिस आता है कि मीटिंग होने वाली है। एक प्रॉक्सी का फॉर्म अटैच किया जाता है कि आप नहीं आ रहे या आप नहीं अटेंड करोगे तो यू कैन फिल इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, दे कैन अटेंड द मीटिंग एट योर प्लेस. The proxy should be appointed in writing and the proxy form should be signed by the member. The thing I have explained you कि एजेंडा के साथ नोटिस के साथ ये एक फॉर्म जाता है प्रॉक्सी, ये मेंबर जो है फिल करके दे सकता है, सो दैट कंपनी विल हैव रिकॉर्ड कि इस पर्सन की जगह ये पर्सन आएगा मीटिंग अटेंड करने। किसी को ऐसे ही एंटर नहीं करने दिया जा सकता मीटिंग में। दे शुड प्रॉपर्ली हैव द थिंग्स इन देयर हैंड दैट दे आर मेंबर्स और आर दे प्रॉक्सीज। ठीक है। बिजनेसेस, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, वेल ये थोड़ा डीप हो जाएगा बट मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं कंपनी के वो सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन से यू कैन से डिफाइन किए जाते हैं, where the votes cast in favor of more than the votes cast against the resolution. जैसे 6 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो अगर 4 ने हाँ बोला, 2 ने ना बोला, तो अगर 4 ने हाँ बोला तो ओके, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी बिजनेस। और जो स्पेशल बिजनेस होते हैं, स्पेशल बिजनेस में क्या होता है कि कम से कम जो रेजोल्यूशन पास हुए 75% ऑफ द वोट्स के फेवर में होने चाहिए, उसको स्पेशल बिजनेस बोला जाता है। ठीक है।
दो तीन FAQs हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे AGM इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस को रन करने का, क्योंकि उसमें मेंबर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं. अगर इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसे से ही बिजनेस रन होने वाला है इन एनी वे. तो इन दोस केसेस AGM जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी कंपनी की रनिंग का. ठीक है. तो फर्स्ट इज हाउ मेनी AGMs मस्ट बी कंडक्टेड इन अ ईयर. अभी तो आप लोगों को क्लियर होगा कितनी AGMs होनी चाहिए. एनुअल जनरल मीटिंग कितनी होनी चाहिए साल में? 1. वेरी गुड. जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है उसको फर्स्ट AGM जो होती है अपनी विद इन 9 months ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग करनी होती है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, कैन वी होल्ड एन AGM ऑन संडे. हम संडे को AGM कर सकते हैं. यस, AGM जो है संडे को हो सकती है अनलेस जो संडे है वो कोई नेशनल हॉलीडे ना हो. हमारा लॉ ये डिफाइन करता है कि किसी भी नेशनल हॉलीडे को कोई भी मीटिंग, चाहे बोर्ड मीटिंग है चाहे AGM है, वो नहीं हो सकती, बट पब्लिक हॉलीडे को हो सकती है. और जो बिजनेस आवर्स माने गए हैं हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली वो 9 से 6 है फॉर होल्डिंग अ मीटिंग इवन इफ दैट इज ऑन संडे. ठीक है. उसके बाद अपना नेक्स्ट है, कैन एन AGM बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया. AGM जो है इंडिया से बाहर हो सकती है. A company other than the OPC must conduct at least one annual general meeting in a financial year. OPC is one-person company, जो मैंने आपको बताया था एक कैरेक्टर होता है. The first AGM of the company, a newly incorporated company, should be held within 9 months from closing of the first financial year. Else the company does not need. Ma'am, you are not audible. I am so sorry. Anyways, I am just about to finish. My last thing is, last slide is कि AGM public holiday पे हो सकती है या नहीं हो सकती है. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So I'm very close to my laptop now, and this is the last slide. Last question कि AGM जो है public holiday पे हो सकती है या नहीं हो सकती है. Yes, AGM जो है पब्लिक हॉलीडे पे हो सकती है. कंपनीज एक्ट 2013 जो है स्टेट करता है कि AGM जो है नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती है बट पब्लिक हॉलीडे पे हो सकती है. एंड ऑल संडेज आर पब्लिक हॉलीडेज. ठीक है. Thank you so much, guys. I think my slides are over, but if you have any questions, you can ask me. Yes, girls, if you have any query, you can ask or type in chat box. मैम CEO या CS में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है इन द कंपनी? CEO is चीफ एग्जीक्यूटिव. ठीक है. वो कंपनी के बिजनेस को रन करता है. और CS is the company secretary. That person helps to run the business. That person helps to understand the law. अगर कोई भी कंपनी कोई डिसीजन ले रही है तो CS आपको एडवाइस करता है कि दिस इज राइट और रॉन्ग. और जो CEO है वो डिसाइड करता है कंपनी में करना है या नहीं करना. तो बोथ हैव इक्वल इम्पोर्टेंस. तो ऐसा नहीं है कि इसकी ज्यादा है और उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है. वी आर द एम्प्लॉइज, द CS आर द एम्प्लॉइज. They advise on these things and CEO is one of the decision makers and top executive level persons. Are you clear, Kashish? Yes, ma'am. What with the financial perspective? Who is paid more? Who is paid more? Of course, CEO. देखो, I won't lie here. CEO decision ले रहा है, business run कर रहा है, और CS compliance बता रहा है. जिसको पैसा ला रहा है, पैसा उसी को ज्यादा मिलता है. And CEO बनना is not a small thing. CEO is the person who actually takes the decision for the organization and brings in the money. Takes the decision and brings in the money. He's the risk taker. Okay, ma'am. Any other question?
क्या एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग वन डे पे ही हो सकती है? Well, this is quite tricky question. जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है सारे मेंबर्स को बुला के की जाती है, तो होल डे प्रोसेस होता है और इसकी प्रिपरेशन 1 मंथ पहले हो जाती है। बोर्ड मीटिंग्स जबकि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसके लिए भी आपको एडवांस में अप्रूवल्स लेने होते हैं, सबको बताना होता है। तो जनरली दिस इज नॉट दी प्रैक्टिस कि आप दोनों मीटिंग्स एक दिन पे करो। मैम जी मैम वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग इकट्ठे नहीं हो सकती क्योंकि बोर्ड अपना डिस्क्लोज नहीं करना चाहता जनरल पब्लिक के सामने कि वो क्या करना चाहते हैं कंपनी के लिए आगे, Yes, तो ये भी हो सकता है। yes, that is specific to the related to matters of company inside matters. In AGM, we decide generally approval of accounts, how to appoint auditor, who is to be appointed as auditor. And board meeting is specific to the internal business of the company generally. एब्सोल्युटली, एज आई टोल्ड यू कि तो एजीएम हमारा, ओके, एज आई टोल्ड यू जो एजीएम रहता है स्पेसिफिक डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड शेयरहोल्डर रिलेटेड टू शेयरहोल्डर्स विद रेफरेंस टू शेयरहोल्डर्स लिए जाते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस होते हैं दे आर सोली देयर डिस्कशंस, देयर डिसीजंस, तो वो एक साथ नहीं हो पाती दोनों मीटिंग्स। Any other question? मैम हमें बताया गया था कि ई सर्टिफिकेट्स बनेंगे जो 70% मतलब कि क्लियर कर लेंगे, तो हमें क्या कोई गूगल फॉर्म वगैरह क्लियर करना पड़ेगा इस चीज के लिए, मतलब कोई एमसीक्यूज वगैरह का कोई टेस्ट होगा? Shivali, can you please answer this? Yes, there will be MCQs and there will be quiz on this role of company secretaries. And I and Priyanka ma'am will decide when to hold this quiz, and after that you people will get the certificates. ओके मैम। Shivali, do you think कि कोई और information भी यहाँ पर add करना जरूरी थी meeting से related? Have I missed on something which you can add on? Actually, ma'am, this program is for like to make them aware about the company secretary course that they should Okay. get for it. It's like a career awareness program come workshop. Okay, So okay, all right. topic from their curriculum. It's there in their curriculum also, role of company secretaries, so that we can have a detailed view over this, so that they can decide to come over for this course. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Actually, Shivali ma'am, the thing is, I was not aware of the whole, criteria you had chosen. But for me, it was like more of CS thing. So I think मैं बहुत deep में नहीं चली थी. Actually, we have covered that day before yesterday, and yes. But the thing is, people are not so much interactive ones. The problem I also have faced, this problem I also faced. I was telling them to own the camera, but you know, guys, people, you should be interactive. Like, we are not your teachers, and we will just help you. You can take us as your career coach because we have experiences of 13-14 years. So we will not judge you at all. In fact, you guys will judge us कि उसको आता है, उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं. So it's perfectly fine. You can be easy with us. जैसा question है, जो question है, you can ask us. There are chances हम लोग भी able नहीं होंगे answers करने के, but it's always good to listen from you guys. The youth and the generation, the new generation, right? You are on mute, Shalima. You are on mute, ma'am. okay. Yeah.
Otherwise, the idea behind the program will get defeated. Absolutely. Absolutely. So please, I think we're left with very few minutes. I want you guys to be interactive and ask any questions if you have. In fact, just share the idea that whether you like the role of CS or not, except monetary part. That's only depends on your caliber. कि आप CEO से ऊपर भी जा सकते हैं, and you can be CEO as well as CS, right? Director as well as CS. So this is solely your caliber. Is Khalsa College has name in Ludhiana. Khalsa College girls are one of the best, one of the who have that much of caliber. I can say not from a पंजाबी में कहते हैं ना पेंडू स्टाइल नहीं है. Go over there. Khalsa College की reputation is of a different kind, but this time I just seen first time कि girls are not interacting. Very interactive, yeah. We are 53 people. 2 is like Kimi and Shivali, and I hope except from 2 of us and Shivangi, yes. There are 50 students, so we want you guys to be interactive. Nice to see you, Bharti. Please ask if you have any question, or please share any of your experience about this, this 3 days seminar or the workshop. What have you learned, or anything you wanted us to add in? Nice to see Kashish, Harshita, and more. I had taken so many names on very first. Manat, Gurpreet, Shishti, Kashish. Wow. Gurpreet is gone. Harshita gone. Guys, please come forward. Even if you are in your night suits, that's perfectly fine because we all are at home, right? So no need to be conscious. Shivangi ma'am, I think we can conclude this workshop now. Okay, ma'am. Okay. So it was our pleasure to hear you. It was our pleasure to hear you. Thank you, Kimi ma'am, for covering the topic in such a elaborative manner. You surely directed the confusion away which was residing in many CS aspirants. I would also like to thank Shivali ma'am for coordinating with us. And special thanks to our HOD ma'am, Dr. Priyanka Khanna, for organizing this workshop. I'm sure our students got definitely benefited from this session. Thank you everyone for being great audience. Have a nice day. And feedback link is posted in chat box, so you can fill it right now. Thank you so much, ma'am. Thank you guys. Thank you so much. Thank you, Shivali ma'am, for giving me this opportunity. Thank you, Kimi ma'am, for sparing your time and sharing valuable information with students. Thank you so much. Sure. Thank you. Students, One more thing, participants are requested to turn on your videos so that we can have a good click with you. Turn on your videos, girls. Harmeet ma'am, you take photograph. Harmeet ma'am. Kimi ma'am, can you just stop sharing your screen, please? Actually, we have to take a pic. Sure. I forgot to unshare that. Just give me a moment. I'll stop sharing. I'll pause. Thank you, ma'am. Yes, girls, please just 1 second. Let me. Yes, all the girls are requested to switch on their cameras. Thank you so much, ma'am, and the students. Thank you, guys. Best of luck. Take care. Good day. Have a good day. Okay, bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye.